Morning, guys. Welcome back to the channel. So it is 12th of November. So happy Diwali, guys. Belated happy Diwali. And it's my fifth day of work. So it is going to be a work day vlog. It is 6:13 a.m. in the morning. आज संडे है तो मैंने वर्कआउट नहीं किया. I just had bath and coffee बनाई मैंने अपने लिए. So I will watch some news and enjoy my coffee. After that I will leave for the work. See you guys at the hospital, I think. As I reached hospital, I started grabbing all the things for the patient blood work like ABG, LFT and KFT. For ABG we need to heparinize the syringes, so first of all I did that, and then like a professional phlebotomist tried my best to take blood in first prick. We have to work fast because all the sampling work should be done before 11 क्योंकि वो सब सैंपल लैब में भी भिजवाने होते बाद में. After sampling, I went with the patient for MRI. I had all the emergency medications and midas to sedate the patient for MRI, but उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी. For your curiosity, patient का diagnosis GBS था. After finishing all my morning tasks, I found a peaceful place on the campus to have my brunch. And while having my brunch, I enjoyed Office. It is really hilarious, really funny web series, highly recommended. After that, I had a productive study session in the library, learned about the immunization schedule of other country, and they don't have to immunize the childrens with BCG because there is no tuberculosis in that country. It is time for evening ABG sampling, and then I got a call from our SR ma'am. I had to take a patient for MRI. He just got admitted today in the ICU with subarachnoid hemorrhage and वो HIV positive भी था, तो I was extra cautious while handling this patient, and मैंने फिर इसकी RT भी डाली थी, trials tube. Hello guys, good morning again, and it is 16th of November. I am recording this clip after 2 days. I think दिवाली वाला दिन था. So after that, आज मैंने कैमरा उठाया ये. Yesterday I went to the bed a bit late क्योंकि कल मैच था, इंडिया फाइनल में पहुंच गया है. अभी मैं क्या करूँगा? मेरे पास कल Amazon के पार्सल आए थे, तो I am going to do the unboxing क्योंकि कल से मैंने वो खोला नहीं, कल मैं मैच ही देख रहा था. So this time I am trying this new coffee, Sleepy Owl. तो देखते हैं क्या कुछ टेस्ट रहेगा. हेज़लनट फ्लेवर में मंगवाई मैंने कॉफ़ी. And for these things, link will be in the description. You can check out. And मैंने ये लाइट्स भी मंगवाई थी क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड में लाइट है जहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा रखी है उसकी जगह पे रिप्लेस करूँगा ये.
सो ये लाइट से चलेंगे ना कि बैटरी से। आई नेवर थॉट कि इतनी लंबी चली जाएगी यार। अब आगे इसको कंटिन्यू करूं कि यहीं पे बस ये जो कपड़ों वाला रैक है यहीं पे खत्म कर दिया जाए इसको। डू यू गाइस थिंक? कमेंट डाउन बिलो। मैं अगली वीडियो में सेटिंग चेंज भी कर दूंगा अगर कुछ पसंद नहीं आया तो। आई डोंट नो मैन। ओके, आई विल जस्ट कीप इट लाइक दैट। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। पूरा खत्म कर दिया मैंने अभी ये। लेट मी डू द वाइड एंगल। तो ये है वाइड एंगल में एंड क्या कोजी वाइब है यार। रियली कोजी एंड विंटर्स आ गया अभी तो काफी अच्छा लग रहा है वॉर्म लाइट देख के। So I had a cold shower and me after trimming my beard. So I think वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, but before that I want to share some informative things like in previous vlog I said। तो जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल, if you don't follow my टेलीग्राम चैनल then do follow my टेलीग्राम चैनल। मैं वहाँ पे कभी कभी पोस्ट करता हूँ, इतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ to be honest। तो मैंने वहाँ पे पोस्ट की थी रिगार्डिंग द एंटी स्नेक वेनम। तो हमारे वहाँ पे एक पेशेंट भी आया हुआ था स्नेक बाइट का। सो मेन हमारे 4 टाइप्स होते हैं जो स्नेक्स के होते हैं, जो लाइक न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक वंस आर द कोबरा, क्रेट एंड कार्डियोटॉक्सिक आर द रसल वाइपर एंड सो स्केल्ड वाइपर। तो इन 4 टाइप के स्नेक्स के अगेंस्ट एंटी वेनम वर्क करता है एंड मोस्ट लाइक 75% ऑफ द स्नेक्स इन इंडिया आर नॉन वेनमस। व्हाट इज द फर्स्ट मैनेजमेंट यू विल डू? लाइक कोई अगर स्नेक बाइट का पेशेंट मिला है आपको कई बार नागिन हॉस्पिटल में, तो आप उसको एक सिंपल सा स्प्लिंट लगाओगे ना, टॉर्निकेट अप्लाई करना है ना कि उसको लाइक सक करना है वेनम को। वन मोर थिंग आई वांट टू से इज दैट हाइपरबिलिरुबिनीमिया, कॉन्जेनिटल कॉज ऑफ हाइपरबिलिरुबिनीमिया। तो इसमें हो जाता है हमारा DGC या DCG, जो भी लगा, डबिन जॉनसन एंड क्रिगलर नजार एंड हिलबर्ट। दीज आर द 3 मेन कॉज ऑफ कॉन्जेनिटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया। देयर आर पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल में हमारे ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग। डू चेक आउट दैट थिंग, ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग। 2 days before only I learned about these things. I never heard about this like breastfeeding की टेक्निक खराब हो तब भी जॉन्डिस हो सकता है यार। दैट इज दैट एंड ABO इनकम्पेटेबिलिटी होगी तब भी जॉन्डिस होगा। तो कॉन्जेनिटल कॉज होता है हमारा क्रिगलर नजार, डबिन जॉनसन एंड गिलबर्ट। इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा हमारा गिलबर्ट में, क्योंकि ये प्री पैटी कोज है। देन सो हेपेटोसेलुलर कोज में आ जाएगा हमारा क्रिगलर नजार आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस, बट क्रिगलर नजार में हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट, हमारे इंक्रीज होंगे। एंड इन द डबिन जॉनसन ये इट इज काइंड ऑफ लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्ट हेपेटिक कोज है, तो इसमें हमारा हो जाएगा डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया। दीज आर द 3 मेन congenital cause of hyperbilirubinemia, ABO incompatibility, pathological, physiological। इसमें आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेना। I think that is all and I hope you enjoy these kind of videos। और अभी मेरे ऑफ डे हैं, लगातार मैंने 6 दिन ड्यूटी की है 8 to 13। If you want me to shoot day in life, off day in life, like जिस दिन मेरा ऑफ होता है तो उस दिन मैं कैसे अपना दिन स्केड्यूल करता हूँ, लाइक स्टडी डे लोग, क्योंकि आजकल पढ़ाई चल रही है, एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोग वो व्लॉग देखना पसंद करोगे तो आई विल ट्राई टू शूट दैट व्लॉग इन दिस वीक ओनली बिकॉज आई हैव सम ऑफ डेज। दैट इज ऑल एंड सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय, पीस।